हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद द सीपीसी सीरीज। हम सीपीसी में सारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज द फोर्थ वीडियो। In the previous video, we have already discussed some of the basics before entering into CPC, like what are rights, what are legal rights, what is considered to be the violation of legal rights, and what is going to be the consequence if the legal right has been violated, and how we are going to get the remedies from the court of law. ये सारी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं. So today's topic is all about section 9 of CPC. Okay, and section 9 of CPC is all about suit of civil nature. In the preview, what we are going to study, I am just introducing you, like I will give you some basic introduction, then we will know कि jurisdiction चीज क्या है. सेक्शन 9 आप बोल रहे हो, तो सेक्शन 9 इज ऑल अबाउट द गेटवे टू सीपीसी. सीपीसी के अंदर आपको जाना है तो आपको सेक्शन 9 के थ्रू जाना पड़ेगा. सो सेक्शन 9 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द गेटवे टू सीपीसी. आपको सेक्शन 9 के द्वारा ही सीपीसी के अंदर जाना पड़ेगा. सो when we're talking about section 9 of CPC, so the concept of jurisdiction comes to picture. So we are going to discuss about jurisdictions and its types. Then we will discuss about what is the difference between suit and cases. Many of the times you can hear the word suit and sometimes you will hear the word case. तो सूट केस एक तरह का लगता है, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस? इसके बीच में कुछ डिफरेंस है या नहीं है? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड एज ए लॉ स्टूडेंट. Okay, then we will enter into section 9. Section 9 is the gateway and it is talking about suit of civil nature or civil suit. So what is suit of civil nature, what is civil suit, we are going to discuss here. Mainly in section 9 there are two concepts, or there are two aspects. One is a positive aspect and one is a negative aspect. So the suit of civil nature is considered to be the positive aspect and the impliedly or expressly var is considered to be the negative aspect. तो इसके बारे में भी हम थोड़ा बात करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे तो ये चीज क्या है. And lastly, we are going to discuss some of the important questions or the area or types of questions that can be asked in the examination. जो examiner आपको पूछ सकता है इस particular concept से in judiciary or any other competitive examinations. Okay. Coming to the next part, यहाँ पर आप देख सकते हैं there is a photo. Judge साहब is there. You are going to be the future judges. So hello future judges. This section is very important for you. आपके लिए ये section बहुत ही important है. Let's say why this picture is there. या इस picture में आप देख सकते हो there is a judge and there are two sides. एक lady advocate है और एक don't go for the collar of the suit और एक मेल एडवोकेट है. तो उनके बीच में जो झगड़ा चल रहा है, यू कैन सी माय लॉर्ड दिस कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई दिस मैटर. एक पार्टी बोल रहा है माय लॉर्ड दिस कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई दिस मैटर. ऑन द अदर हैंड द अदर पार्टी इज सेइंग नो माय लॉर्ड दिस सूट इज नॉट मेंटेनेबल as the court has no jurisdiction to try the matter. So यहाँ पर सारे चीज whatsoever the things is there is all about jurisdiction. तो जो भी dispute चल रहा है, जो भी conflict चल रहा है, जो भी argument चल रहा है, it is on the basis of jurisdiction. Jurisdiction के basis पे सारे argument चल रहा है. एक पार्टी बोल रहा है कि सर jurisdiction है और दूसरा पार्टी बोल रहा है कि jurisdiction नहीं है. So as a judge you are going to decide in a civil court, in a civil case, whether you have jurisdiction to try a matter or not. तो jurisdiction आपको determine करना पड़ेगा. So this is the reason why it is very important to understand what is suit of civil nature and what is all about the civil jurisdiction. The concept of suit of a civil nature under the Code of Civil Procedure 1908 is fundamental in determining the jurisdiction of a civil court. कोई भी सिविल कोड का जुरिस्डिक्शन को डिफाइन करने के लिए सेक्शन 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सूट ऑफ सिविल नेचर चीज क्या है उसको भी डिफाइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है वी विल डिस्कस. द फर्स्ट थिंग बिफोर अंडरस्टैंडिंग सूट ऑफ सिविल नेचर और सेक्शन 9, द फर्स्ट कंसेप्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज जुरिस्डिक्शन एंड इट्स टाइप्स. क्योंकि जो सेक्शन 9 है और यू कैन से द सेक्शन
9 है या जो सेक्शन 9 है ये जुरिस्डिक्शन के कंसेप्ट पे बेस्ड है। द होल कंसेप्ट ऑफ सेक्शन 9 इज बेस्ड अपॉन जुरिस्डिक्शन। ये जुरिस्डिक्शन के कंसेप्ट पे बेस्ड है। देन व्हाट डू यू मीन बाय जुरिस्डिक्शन? जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है? देयर आर टू वर्ड्स इन द टर्म जुरिस्डिक्शन। देयर आर टू वर्ड्स, वन इज लॉ juris and second one is dictio. There are two words, one is juris and second one is dictio. Whenever you're talking about the word juris means law and dictio means speech or declaration. So on the basis of what law you are speaking in the court? Okay, jurisdiction means on the basis of which law you are speaking in the court of law. इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई हम करेंगे। इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 jurisdiction refers to the authority conferred upon a court to hear and decide a case. इसका मतलब सिंपली हिंदी में ये है कि कोई कोर्ट का ऑथोरिटी टू डिसाइड ए मैटर, कोई कोर्ट का ऑथोरिटी है या नहीं है एक मैटर को डिसाइड करने के लिए, दैट इज कॉल्ड jurisdiction. उसी को ही कोर्ट का jurisdiction माना जाता है या बोला जाता है, as simple as it is. So there are several types of jurisdiction in CPC which are essentials for determining the competence of court to entertain a case. So jurisdiction हमको पता लग गया है कि jurisdiction क्या है. Whether a particular court has authority to try a matter or not, that is called jurisdiction. हम बातों बातों पे हम बोलते हैं कि आपका authority कौन है, आपका authority कौन है, उनको हमको complain करना है. तो in the matter of legal cases, whosoever is going to decide your cases, that particular court must have authority or must have jurisdiction to decide the case. Unless and until a court has jurisdiction to try or decide a case, then how can the court is going to entertain your case? कोई भी केस को डिसाइड करने के लिए उस कोर्ट के पास jurisdiction होना जरूरी है. Then what are the types of jurisdiction? हम jurisdiction क्या है हमको पता लग गया. Now we are going to discuss what are the types of jurisdiction. Mainly देखा जाए तो बहुत टाइप का jurisdiction है, but जो तीन main important jurisdiction है, that are pecuniary jurisdiction, territorial jurisdiction एंड सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन. इन तीन जुरिस्डिक्शन के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. व्हाट डू यू मीन बाय पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन? व्हेन द वर्ड पेक्यूनरी कम्स टू पिक्चर और कम्स टू योर माइंड, यू मस्ट अंडरस्टैंड पेक्यूनरी मीन्स मॉनिटरी. Pecuniary means monetary value. That it determines the monetary value of a suit that the court can hear. जो भी मॉनिटरी वैल्यू के ऊपर सूट बेस्ड है, हम एग्जांपल के थ्रू में हमको समझेंगे. लेट्स से देयर इज ए प्रॉपर्टी. ओके, द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 50 lakhs. Okay, similarly there is another property, the value of that property is 5 crore. What is your, just apply your common sense and say whether the court who is competent to try a 5 crores matter, or let's say if the court is competent to try the maximum pecuniary jurisdiction of a court is let's say 10 lakh, can the court entertain a matter of 5 crores? कोई भी कोर्ट का जो पेक्यूनरी वैल्यू है वो 10 लाख तक है. मैक्सिमम कोई डिस्प्यूट का जो पेक्यूनरी वैल्यू है और मॉनेटरी वैल्यू है, दैट कैन बी अप टू 10 lakhs. तो 5 करोड़ वाला मैटर सुन सकता है क्या? नहीं सुन सकता है. सो in this process there is a hierarchy in the legal system where different courts has given different pecuniary limits. Let's say कि कोई lower level का कोर्ट है, उसको 10 लाख तक वो मैटर सुन सकता है, उसके ऊपर वाला कोर्ट 15 लाख तक सुन सकता है, उसके ऊपर वाला का 1 करोड़ तक, उसके ऊपर वाला 5 करोड़. This is the hierarchy there is in the legal system in the context of pecuniary jurisdiction. Pecuniary jurisdiction के लिए यहाँ पर एक hierarchy we have to follow. तो every court with a particular pecuniary jurisdiction, with a pecuniary limit or monetary limit, can hold the matter. So this is the first thing about pecuniary jurisdiction. And इसका जो relevant section है, section 6 है and section 15 है, we will discuss in detail later on. जो की पॉइंट है ये आपको याद रखना पड़ेगा. ए कोर्ट कैन नॉट एंटरटेन ए सूट इफ द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एक्सीड्स इट्स प्रिस्क्राइब्ड पेक्यूनरी लिमिट्स. ये इंपॉर्टेंट है. सेकेंडली, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन? टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में क्या है?
This refers to the geographical limit within the court can exercise the authority. यहाँ पर एक पिक्चर है, ये पिक्चर में ऐसे नहीं लगाया हूँ, दिस इज नॉट लाइक द पार्ट ऑफ पीपीटी. यहाँ पर एक पिक्चर बनाया गया है, सॉरी ये जो पिक्चर है बनाया गया है. Let's say from this is India, the black area is India and all these circles are the state. ये सारे सर्कल स्टेट है और ये उड़ीसा वाला स्टेट है. Let's say this is उड़ीसा. उड़ीसा में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, उड़ीसा में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है. ये है उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट खोर्धा. ओके, खोर्धा. यहाँ पर एक प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, सॉरी यहाँ पर देखो जस्ट लुक एट द माउस आरो. यहाँ पर एक प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, तो किसके जुरिस्डिक्शन, किसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में किस कोर्ट का आएगा, तो ये खोर्धा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ही जुरिस्डिक्शन में आएगा. ओके, यहाँ पर लेट्स से अनदर एंगल से देखते हैं. यहाँ पर एक डिस्प्यूट हुआ है और यहाँ पर डिफेंडेंट रिजाइड कर रहा है, तो केस आप यहाँ पर फाइल कर सकते हो. किसके जुरिस्डिक्शन में आएगा, तो खोर्धा कोर्ट के आएगा, और कोई डिस्ट्रिक्ट में आप नहीं जा सकते हो. यहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, देन यू हैव टू फाइल अ केस इन दिस पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन, इन दिस पर्टिकुलर कोर्ट. ये जो ब्लैक वाला पॉइंट है ना, दिस इज द खोर्धा कोर्ट, लेट्स से खोर्धा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. ओके, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी है, तो इसका जो टेरिटोरियल, ये जो ब्लैक वाला पॉइंट है, दिस इज द कोर्ट एंड द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्ट इज दिस सर्कल, दिस द खोर्धा डिस्ट्रिक्ट. ओके, दिस सर्कल, ये जो सर्कल है इसी का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है. So whatsoever case, whatsoever property, immovable property situated, this is the subject matter of this particular court. Okay, यहाँ पर डिफेंडेंट लेट से रिसाइड कर रहा है, तो भी ये कोर्ट, यहाँ पर केस फाइल हुआ तो ये कोर्ट एंटरटेन करेगा, लेकिन ये कोर्ट इसका मैटर नहीं ले सकता है. तो दिस इज कॉल्ड द टेरिटोरियल, ये जो एग्जांपल है, दिस इज कॉल्ड द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन. तो हियर इट रेफर्स टू द ज्योग्राफिकल लिमिट. ज्योग्राफिकल लिमिट मतलब ये जो डिस्ट्रिक्ट है, मैक्स टू मैक्स ये जो डिस्ट्रिक्ट है, इसका जो टेरिटोरियल लिमिट और ज्योग्राफिकल लिमिट है, दैट्स ऑल. Relevant provision is section 16 to section 20 of CPC. Section 16 to section 20 of CPC. Key points. What are the key points? The case relating to immovable property are generally filed where the property is. This is one type of illustration I just gave you. There are many things we have to consider because we are going to discuss about different section, and territorial jurisdiction is very, very, very important. As we are going to read about section 9, तो section 9 में आपको पता होना चाहिए मेनली ये सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करता है, और इंपॉर्टेंट जुरिस्डिक्शन है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन और पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन. पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन मींस मॉनेटरी वैल्यू, और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में वी विल मेक ए डिफरेंट वीडियो ऑल टुगेदर एंड इट इज वेरी लेंथी एंड वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो फ्रॉम जुडिशियल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन हम अच्छे से पढ़ेंगे. प्रोविजंस इसका है सेक्शन 16 to 9, देन ऑब्जेक्शन टू जुरिस्डिक्शन, all the things we are going to discuss. And the third important thing is the subject matter jurisdiction, और जिसका लिंक सेक्शन 9 के साथ है, डायरेक्टली नहीं है लेकिन हम बोल सकते हैं. What does subject matter jurisdiction means? आप टेरिटोरी तो देखोगे ऑब्वियसली, आप पेक्यूनरी लिमिट्स तो कोर्ट का देखोगे कोई केस फाइल करने के लिए से. एट द सेम टाइम यू आल्सो हैव टू सी द सब्जेक्ट मैटर, वेदर द सब्जेक्ट मैटर मींस वेदर इट इज अ सिविल और क्रिमिनल. इफ इट इज सिविल then it will be governed by CPC. The provisions of CPC it will be governed. The definition means the authority of a court to decide the case, decide a case अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ नेचर, मतलब ये सिविल है या क्रिमिनल है. क्रिमिनल मैटर है तो क्रिमिनल कोर्ट में उसको डिसाइड करेंगे, सिविल है तो सिविल कोर्ट में डिसाइड करेंगे. इसके साथ साथ इट शुड नॉट बी लाइक जैसे कोई ट्राइब्यूनल, मतलब कोई कंपनी लॉ का ट्राइब्यूनल है, कंपनी रिलेटेड मैटर है, तो दैट शुड बी डिसाइडेड बाय द कंपनी कंपनी ट्राइब्यूनल, और यू कैन से द एनवायरमेंट लॉ का कुछ मैटर है तो स्पेसिफिक ट्राइब्यूनल के साथ हम डील करेंगे. और इनसे लेट्स से कि कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर है, कोई कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड मैटर है तो सिविल कोर्ट में डिसाइड होगा. टॉर्ट रिलेटेड मैटर है तो सिविल कोर्ट का उसके ऊपर जुरिस्डिक्शन है. सो सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन मेनली इट इज इंक्लाइंड टू द नेचर ऑफ केस. केस का नेचर क्या है, वेदर इट इज सिविल और क्रिमिनल. क्रिमिनल है तो क्या होगा, सिविल है तो क्या है. इवन सिविल में भी इफ देयर इज इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ केस and a special court is there to entertain the matter, then also you have to file in that special court, not in the civil court. Okay, so this is called the subject matter jurisdiction, and a reflection of subject matter jurisdiction you can find in section 9. Okay,
तो सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन सीपीसी में से डायरेक्टली मेंशन नहीं किया है कि दिस इज द सेक्शन ऑल रिलेटिंग टू सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, बट स्टिल वी कैन से section 9 have a reflection of it. And what is suit and case and what is suit of civil nature, we are going to discuss it in the next video, so stay connected.